Naimuddin is a native of Hyderabad, India. About his academic qualification, he has done his BDS from Government Dental College, Bangalore in the year 1978, and he has worked as dental surgeon with Ministry of Health in Iran from 1990 till 1994. And ever since he is working in Kuwait with MOH in Farwania region, and he credits total 40 years plus experience. And this is his brief journey. And I'll invite Dr. Mohammad Naimuddin Sahab to please take over the mic and give the presentation. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, inshallah, I will be presenting a brief presentation on dental health awareness. Of course, I would like to share the screen first so that we can have an audiovisual way of conversation. So to start with, we have a slide depicting the different instruments of dental faculty. So the most important is the dental probe and dental mirror. Are you able to see the screen? I have shared the screen. Yes. Okay, yeah. So whenever you visit a dentist, most probably you will find a dentist with a probe and a dental mirror. So that is our important tool. Whenever a patient visits the dental clinic, we have to examine the patient to find out where the lesion is. And after that, we will plan accordingly. So next will be the types of dentition I would like to talk. So there are two sets of dentition in human being. One is the primary dentition and the second one is the permanent dentition. So the primary dentition consists of 20 teeth, 10 in the upper jaw and 10 in the lower jaw. Whereas the permanent teeth has 32 teeth, 28 to 32 teeth. But nowadays, they say in the most civilized person, there are only 28 teeth. The 4 wisdom teeth are congenitally missing, but it's not the case in everybody. So we can take it as 28 to 32 teeth in adults. So, so the primary dentition, inshallah, will be dealt by Dr. Abdul Hakim. So I will not stress much upon that. So let us go for the permanent dentition. The permanent dentition, the first permanent tooth to erupt into the oral cavity is the first permanent molar, which erupts at the age of 6 years. And it is the most neglected one because the parents will be under the impression that it is still the milk tooth. So if it is not taken care of, it will have serious repercussions. It will go for cavity formation and early removal of it. So that is the most hazardous condition. So parents should be aware that the first molar which is to erupt in the oral cavity is the first permanent molar. So one has to take care of it. And any permanent tooth which erupts into the oral cavity, it lasts for the lifetime. There is no such thing that anyway it has to fall down. So at the age of 50 or 60, we have to make a denture. No, this is a wrong notion. So once the permanent tooth erupts, it lasts up to the last breath of a person. So one has to take care of it. So the permanent teeth are slightly darker than the milk teeth, and it has deep fissures. It is for to have good mastication, such that the food can be chewed properly. Okay, and next one is the mixed dentition. So before permanent dentition, with that comes the mixed dentition. So from 6 years to 13 years, this period is called as mixed dentition. In this age, a person may have permanent teeth as well the deciduous, that is milk teeth. So different stages are there in this. So one stage is called as ugly duckling stage, in which the front teeth, the incisors,
they divert erupting canine. So it gives a very bad view. So for this, nothing to worry. As the permanent canine erupts into the mouth, the other incisors will take its correct position. Then the function of teeth, as you know, it is basically meant for mastication. The food should be chewed properly so that it helps in digestion. And also the saliva, the water which is found in the mouth is called as saliva. It has amylase as an enzyme. It helps in the digestion of the food, and also it also decreases the load upon the digestive system. And secondly, the speech. For speech, the teeth are very important. Without teeth, there are certain syllables which cannot be pronounced properly. And also aesthetics, smile and face shape, and maintaining bone height of jaws, bone gets resolved and flattens in absence of teeth. The teeth are held in the alveolar bone, which is an extension of the maxilla, that is the upper jaw, and the extension of mandible, that is the lower jaw. So in total, there are 32 teeth. So they have to be kept well clean and okay. And then next is the tooth anatomy. The tooth is divided into crown and root. The crown is the one which you see in the oral cavity. Clinically, we can see it, but the root portion is hidden in the bone, and it is covered by the gums. Okay, so crown, it is composed of enamel, the outermost portion, which is white in color, and underlying it there is dentin. Dentin has sensation, but enamel doesn't have any sensory or nerve supply. Whereas dentin is close to the pulp. Pulp is the innermost portion of the tooth. It contains the nerves and the arteries, veins, which supplies nutrients and also the sensory function. And the root is covered, like dentin is covered by enamel in the crown portion. Similarly, the root is covered by cementum. So enamel is the hardest part of the body. Second comes dentin, because enamel contains 95 to 98 inorganic components like calcium, phosphate, ions. Okay. Whereas next comes dentin, is the second hardest portion in the body, and third comes the cementum. And after that, bone contains 65% inorganic salts. Like so, other thing what we should take care of is food and oral hygiene. Eating nutrient-rich food promotes healthy teeth and gums. This includes fruits, vegetables, protein foods, calcium-rich food, and whole grains. Calcium is an essential mineral found in teeth. Food like milk, yogurt, cheese, salmon, etc. promote strong teeth and bones, especially for younger age group when teeth are being formed. And being alkaline, it also helps to lower the acid levels, causes of caries in the mouth. So the pH level of the oral cavity should not be less than 5.5. Below 5.5, it is acidic in nature. So that causes the dissolution of enamel, and there will be cavity formation, everything. So, and also the crunchy food like apples, nuts, carrots, celery gets the saliva going and helps to wash away plaque causing bacteria and food particles. So the tooth surfaces should be kept clean all the time. And yes, this is it is the depiction of the sugar. So the sugar, carbohydrates, they should not be, especially the sticky chocolates, they should not remain on the tooth surface for a longer time. And with the presence of plaque, so there will be bacterial activation, and the sugar breaks down into lactic acid. Then there will be cavitation of the tooth surface. And plaque is the biofilm that forms on tooth surfaces, and it comprises of mainly bacteria and food particles. So what you see, a light yellowish
in color, soft, yellowish, that is plaque. So plaque, if it remains untouched without brushing, it gets calcified because saliva contains calcium, phosphate, everything, it gets hardened. So later on, it will be difficult for a normal person to remove it on its own unless it is cleaned by a qualified person, that is dentist. And also, there is harmful bacteria in close contact with teeth and surrounding, which leads to bleeding gums and other gum diseases. So this tartar or the calculus, which gets deposited on the tooth, it causes inflammatory reaction in the gums. So gums became inflamed or enlarged in size, and it bleeds. So usually people complain of bleeding. That complaint is only because of the calculus, most of the cases. So once it gets cleaned and by through professional means, it will be treated, inshallah. Then formation of caries, especially the surfaces between the teeth, which can't be cleaned properly by toothbrush. So such surfaces are most probably the first ones to get affected by caries. So one should take care in cleaning the interdental surfaces by means of dental floss and also good amount of brushing. And also the chewing surfaces of the teeth, one should take care of. Brushing, I will tell you in the section of brushing, how to brush. Brush should not be used in a to and fro way. To and fro way and excessive use of force will lead to abrasion of the enamel. So people are under the notion that the more harder you brush, the more whiter the teeth will become. It's a wrong notion, because the enamel, that is the outermost coating of the tooth, is white in color compared to the underlying dentine, which is pale in color. So the more harder you brush, the more dentin will get exposed and it will be more paler in color. So it is vice versa. So normal brushing is below upwards for the lower teeth and above downwards for the upper teeth in a circular motion. And also we must take care of the chewing, that is the biting surfaces. At least you must brush for 2 to 3 minutes twice a day. It is most advisable. Or if you can brush at least once a time, that is also good. And change your toothbrush every 3 to 4 months as the bristles get worn out. Okay. And any toothpaste which contains fluoride is good enough for usage. And secondly, the method of flossing, because in between two teeth there is dental papilla, that is the gum. So one should not impinge upon the interdental papilla. If you force the floss straight away, then it gets hurt. So the best way is to make contact with one tooth surface and then go deeper towards the gum without hurting the interdental. And similarly, you should retract a little much and a little more, and then take the other surface of the tooth. And then again, you can go below the interdental papilla without hurting the interdental papilla. In this way, not much harm will be done to the gum. Then this mouthwashes, mouthwashes, I suggest it should be done for a short period of time, not through and through, not every day, because this causes imbalance in the oral microbial flora. So that's not good. That can lead to gingival infections. So if it is needed, then only you must use the mouthwash for about a week. And also the tongue surface should be cleaned with a tongue cleaner, because most of the microbes are being lodged on the tongue surface. Okay. And initially, for adult teeth, or in even primary teeth also, there are fissures in on the tooth surface, on the biting surface. So those fissures, if they deepen, so that can lead to
cavity formation. So for as a preventive method, we can use fissure sealants to close those fissures. In that way, we we can stop cavitation, and also it helps to keep the tooth surface easy to clean. And then this is oral prophylaxis, which I already told you. See, this is the tartar or calculus, and before and after we can see and yes, and these are the restorations. See, before the near the gingival margin, you see the cavity formation. So after with simple cavity preparation and fixing them with composite restoration, the aesthetic has improved and also the function. And the lower slides, you can see the amalgam fillings. Amalgam fillings are basically for the posterior teeth, that is the back teeth, molars, premolars. Whereas for anterior, from aesthetic point of view, we give composite tooth color restorations. But amalgam is time tested and nothing to worry. Recently, there are rumors that amalgam is harmful, but there's nothing like that. It's all the business tactics from the from the this composite and other allied white color restorations. So then if the cavity deepens, it goes beyond the dentine, then it touches the pulp, which is the innermost portion of the tooth. So if the cavity deepens, so the microbial activity, it it gives rise to infection. So you see the down, there is if it is still left untreated without removing the nerve, so it can lead to abscess formation. So in most of the cases, when once the tooth undergoes abscess formation, it has to be removed. So one should be careful that immediately after seeing cavitation in any of the tooth, one should immediately report and see. This is the X-ray, and this is the photo where we can see the left side of the jaw being swollen up. And this is X-ray. X-rays are most important tool in the hands of dentists. We can visualize through it whether it is involved pulpally or not. So if it is involved pulpally, that is if it reaches the nerve, we may have to extirpate the nerve, and thereby we can save the tooth. And these are the methods of doing root canal therapy. First, in the first slide, you can see the caries or decay has reached the pulp, and in the second, we have to open it, and then the third slide is showing figure is showing file. That is the removal of the nerve through the root canal. That is the canal which is lying in the root portion, and then we have to use an artificial filling in the place of nerve. That is gutta-percha filling, and finally we can restore with the filling the crown portion. The root portion has been filled with gutta-percha, and in case if the tooth is badly decayed and if there is not much likelihood of retaining the restoration, in that case we may have to use post that will hold the restoration in place. And finally, after every root canal treatment, if the tooth structure is very weak, we may have to go for crown. So that will hold the restoration and everything in place. So these are some figures given for dental crowns. So first we make impression after cutting the crown, that is crown preparation, and then we take impression. After taking impression, it will be sent to the lab, and the lab people will make the crown, and it will be cemented onto the tooth. And this is indications for dental crown is post endodontic, means when the endodontic treatment is done, that is the root canal treatment is done. After that, we may have to go for dental crown. And if the tooth is fractured or worn out on multi-surface restoration,
and sensitivity. These are some of the indications for making crown. And the different types of crowns what we have is stainless steel crown, which is normally used for in pediatric dentistry because they are the teeth to stay for a short time. By 10 to 12 years, they all will fall. So stainless steel crowns are not normally used in adults. And previously, gold was also used as crowns, but because of aesthetic reason, it is not used much nowadays. And also the cost is another factor in not using the gold. And third, what we have is ceramic crowns, that is porcelain crowns. For aesthetic purpose, for anterior teeth, we use porcelain. And nowadays, other types of materials also have come in. Then, and this, in case if we extract any of the teeth, so they have to be replaced. So we have three different types of replacements. One is removable partial denture. You must have seen, everybody must be aware of the removable partial denture with a pink acrylic flange. So one can keep it and one can remove it, especially in the nights. One has to remove the removable partial denture and kept in a bowl of water. And in the morning, every morning, we have to brush the partial denture nicely because the undersurface will have so many microbes that will inflame the gum, especially the palate and the jaw areas. And second type of restoration for missing teeth is the bridge. Suppose if one tooth is missing, so you may have to use the adjacent two of the teeth, one on the front, one in the back. So for to replace one tooth in case of fixed partial denture, you may have to sacrifice the normal healthy crown. So that was the norm till now. But nowadays we are having implants. Implants can be used without hurting the adjacent teeth. In this case, what we do is we do with special tools, we drill the area from where the tooth is missing, cut open the gum and drill into the bone and fix screw. The figure shows clearly the screw, that is the implant, goes into the bone and then we cover up with the flap, that is the gums, and leave it for it to osseointegrate for about 2 to 6 months. But nowadays, some implants are coming which can be done immediately also. So it all depends upon the doctor who's doing it. So the second part is the connector. So this connects with the implant which is inside the bone. And then over it, again, we'll take impression like before what we have done for fixed partial denture. So with the connector in place, we take the impression and send it to the lab to make the crown which will be fixed over it. And the suitable candidate for an implant will be an adult, probably after the age of 18 years. So by the age of 18 years, the bony growth is almost complete, so one can try to attempt it. So before 18 years, it is not advised, but still the jaw bones are in the stage of growth. And also the reasons for failure is the bone thickness should be appropriate, wherein the implant is going to be seated. And also the reasons for failure is poor healing, failure of osseointegration, poor oral hygiene, peri-implantitis, increased load on implant, that is bruxism. Bruxism is the habit of chewing the teeth at night. And also, one has to be careful. People with heavy smoking and drinking is not a good candidate for implant. So here there is a X-ray for the implant. There are 3 teeth implanted, so with 3 implants. So they serve a good purpose. It can stay, but in this case, there is implantitis. You can see the black shadows in between the implants. So it is about to fall out.
there is a bony loss in this. So, so this shows the difference between a healthy and unhealthy one. So in a healthy one, the gum tissue which is attached with the implant will have good epithelial attachment and with a healthy bone. You see the height of the bone in this case towards the healthy side. Height of the bone is very good. But in the unhealthy case, because of accumulation of plaque, there will be inflammation of the gum, and that inflammation of gum causes the bony loss. So there's a clear difference in the height of the healthy bone and the height of the bone on the unhealthy side. And this is an also important topic, dental sensitivity. Dental sensitivity, physiologically, the dentin tubules are filled with fluid which respond to hot and cold stimuli. This movement of fluid causes pain sensation in dental pulp. Okay, so because dentin is connected with the pulp, and pulp has nerve supply, as you can see in the diagram. Yes, so that movement of the fluid within the dental tubules causes the pain. And this is sort of etiology for dental sensitivity. Eating too many citric fruits or the carbonated drinks, these are the etiologic factors. And also wearing off of enamel due to vigorous toothbrushing, bruxism, and other adverse oral habits. And carbonated beverages, acidic food which dissolve enamel. And reflux, the regurgitation brings acid to the mouth. And hereditary defect in enamel, like enamel hypoplasia or amelogenesis imperfecta, these are some of the conditions which can lead to sensitivity of the teeth. This is for management. So the severity of sensitivity is too much, then one has to go for dental crown or composite restoration or RCT. So like the root canal treatment. And the best way is to use soft bristles and apply less pressure while brushing, and use desensitizing toothpaste which contains strontium chloride or fluoride. So drink water right after consuming acidic foods and drinks to lessen its acidic pH. And try fluoride enriched mouthwash or dental trays for fluoride. This is done by dentist in the dental chair. Dental trays with fluoride, uh, yeah, fluoride trays, and this is before exposed dentin tubules and after blocked dental tubules. So there is a clear difference. So once the dentinal tubules are exposed, so there will be sensitivity. So with using desensitizing toothpaste and other methods, it can be blocked, so the sensitivity decreases. And next comes impacted teeth. Impacted teeth usually because of the shortening in the size of dental jaws, there is not enough space for the last or third molar to erupt. So that causes infection of the last molar. So in that case, we may have to remove because there will be food lodgement, and also due to pressure, even the tooth, the one which is lying in front of it, can develop caries and it will get spoiled. So it can cause pressure on the adjacent tooth, causing malalignment, caries, or pain. And these are the different forms of impaction. The first slide which is showing, it is good. The alignment is good. It has erupted correctly. And the second slide which is showing horizontal impaction. It can lie horizontally. So there is no hope of its erupting into the oral cavity. So this has to be removed. And third one, what it's showing is mesial impaction. Mesial means the angulated towards the front tooth. So the one for the lower tooth, mesial impaction is the easiest to remove, and whereas for the in upper jaw, the mesial impaction of the wisdom tooth is the hardest one. Whereas the distal impaction in the last slide is showing in lower teeth, distal impaction is hardest. Whereas
And this is vertical impaction. Vertical impaction also, one has to go for its removal. And one more thing is the line what you are seeing below, that is the inferior dental nerve. It is the main nerve which supplies all the lower teeth. So sometimes we have to look for the proximity of the nerve to the underlying impacted tooth. So sometimes if it is not taken care of, there can be paresthesia of the lower lip. So permanently, the lower lip on the affected side, you will not have sensation. The sensory nerve will get damaged. So next is this management. This slide is showing the way it is removed. Okay, first we can elevate the tooth and remove. It is easy. Otherwise, we may have to open the gums, remove some of the bone, and later it can be removed. Sometimes it just goes very difficult. So anyway, and now comes to the orthodontics. Orthodontic treatments indicate in order to restore function, preserve health, facilitate speech, protect teeth from trauma, and improve aesthetics. So these are the different ways of correcting the mal-aligned teeth. So we have to apply braces. So there are no different types of braces. So metal braces, clear braces, K-aligners, Invisalign. So the Invisalign, wherein you cannot differentiate whether person is using the braces or not. And so to conclude with, I will say, and one more thing, where is that? Before I conclude, I'd like to narrate the hadith by Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Were I not afraid that it would be hard on my followers, I would order them to use the miswak after each wuzu as obligatory for cleaning the teeth, as reported by Sahih Bukhari." So miswak. So actually, these are the cue sticks can be made from many commonly occurring plants such as olive trees. Miswak is mostly associated with the Salvadora persica tree, commonly known as arak in the Arabic. In multiple studies done by WHO and other organizations, it has been found that people who use miswak on a regular basis require much lesser dental care than those who use toothpaste and powders. It fights tooth decay, protects against plaque and malodor, reduces harmful bacteria, provides teeth whitening, strengthens gums, and much more, along with being natural, affordable, and easily available. And the key ingredients of miswak has a set of 19 active ingredients that actively promote stronger teeth while also maintaining oral health, like alkaloids, salvadorine and trimethylamine have an antibiotic. So there are so many things in this: silica, calcium chloride, vitamin C, resins, tannins, essential oils. So briefly, so the first step in this, remove from package and trim about ½ inch of bark from one end. Step 2 is chew on the exposed end until bristles form. Brush as usual in an up and down motion. So to conclude, I would say oral health is the gateway to general health. Good oral and dental hygiene can help prevent bad breath, tooth decay, and gum disease, and can help you keep your teeth as you get older. Hence, it is important to be diligent while maintaining hygiene and not ignore dental tissue, and visit your dentist as needed. Thank you. Thank you very much, Dr. Naimuddin, for the intricate details, and hope we will follow the preventive measures and make most use of the information given. Jazakallah khair.
Yeah. Mhm. Now, moving to the second topic of the evening, dental health and awareness in children by Dr. Muhammad Abdul Hakim. A brief introduction about Dr. Hakim. He is also a native of Hyderabad, India, and he has done his BDS and MDS from Paninia Dental College and Research Center in the year 2017. And he worked as consultant pediatric dentist with Clove Dental, India's largest dental corporate group, for the period of 2 years. Currently, Dr. Hakim is working in Al Muhallab Dental Care in Righe, Kuwait. This was a brief short about Dr. Hakim. And over to you, Dr. Hakim, please lead the session. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wassalam ala Sayyidil Mursaleen. Thank you, Danisa, for the lovely introduction. Assalamu alaikum and good evening to one and all. I would like to begin with thanking Naeem sir for giving us such a lovely presentation. And moving on from there, let's move to the pediatric section, because that is one area a lot of people are unaware about, and there are a lot of questions and doubts regarding this particular topic. So let's begin with this. Pediatric dentistry has a lot of variety of things that has to be done and a lot of things that has to be shared. So we're just going to see in a brief note what all can be done and what all has to be done, so that you get a clear picture of what all things are there to be dealt with. The contents will be something like this. We'll be seeing what is dental home, preventive and restorative dentistry, endodontics, crowns and surgery, space management and habits, and also about special children. So dental home, what exactly is dental home? Dental home is the ongoing relationship between the dentist and the patient, inclusive of all the aspects of oral healthcare that is delivered in a comprehensive, continuously accessible, coordinated, and family-centered way. In short, dental home is a relationship between the parents, the child, and the dentist. So this basically involves a triangle that is something like this. If you can see on the screen, there's a triangle between the parent, dentist, and the child. So according to American Academy of Pediatric Dentistry, they say that the child should be introduced to dental visits not later than 1 year of age or before the first birthday arrives. The reason for this being that the dentist makes sure that you get educated about the gum pads and various modalities that are to be done to maintain for a good oral healthcare. And also, it also addresses the anticipatory guidance or counseling. What is anticipatory guidance or counseling? A lot of parents have a lot of doubts. Doubts regarding teething issues, doubts regarding feeding habits, doubts regarding cavities. So that is something that can be established. So anticipatory guidance is something that, this kind of counseling can be done only when the parents do visit all the pediatric dentist and come up with the kids. So there are a lot of things that happens in anticipatory guidance. The parents are basically educated step by step about all the procedures and all things that they can be expecting out of, among the upcoming things or among the upcoming years in a child. So this basically, answers most of their questions, because a lot of parents, although there's not much problem, but they pretty much are worried about the kids' oral health. So this basically makes sure that you are educated on time, what to expect, and of course, from child to child, what all differences can be seen and who needs what specific treatment. All these things can definitely be educated to the parents, and as and which a follow-up can also be taken up. And the best and the most advantageous thing of this thing is the child gets to see the pediatric dentist, and right from day one, the primary teeth erupt into the oral cavity till he is around 14 or 15 years of age. You being under a pediatric dentist makes sure that you are in proper hands regarding your oral health concern. So let's see, what exactly is teeth cleaning? Why do we need teeth cleaning? The first thing that comes to mind is when you talk about teeth cleaning, people just imagine just taking a small cloth or probably just wiping the teeth with a cloth. I'm sorry to say, but that's not true. Let us begin with something more this thing. As young as the child is an infant, if you can see in the pictures, these young infants have no teeth at all. But this doesn't mean that their oral cavity is not taken care about. The only thing that you have to do here is, most importantly, after feeding via the bottle or when the child is breastfed, just take a soft gauze piece and make sure that the entire gum pads are cleansed. Right from here,
till the teething procedure, until all the teeth come out. This has to be done right from day one. So this is one thing that we all have to be done. So I'll just translate also this in Urdu. अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो अक्सर लोगों की या पेरेंट्स की सोच ये होती है कि जब दांत निकल आए तो तभी से ब्रश करना है। ब्रश वैसी बात बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा छोटा सा मासूम हो, 1-2 साल का भी हो, उसको दांत अभी आने से पहले भी, जब माँ उसे दूध पिलाए या फिर बॉटल की फीडिंग हो, तब उसके बाद आप एक गॉस पीस लेने के बाद जो है सो उसके जो गम्स हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं, और ये करना काफी जरूरी है। उसी के साथ साथ अब ये ब्रश, अब इसी बच्ची को देखिए आप, जैसे हम ब्रश की बात करते हैं, लेफ्ट वाली फोटो देखिए, बच्चों का रोना कुछ रिएक्शन इसी तरह होता है। हम काफी सारे देखते हैं घर में ब्रश पे बच्चे भागते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग पे है, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। We have to make sure that the kids are interested and equally participating in brushing. तो ब्रशिंग एक ऐसी चीज है, what I feel it should be an activity where the parents यानी माँ बाप के साथ बच्चे खुद ठहर के ब्रश करें साथ ही साथ, because parents are excellent examples for this thing. अगर आप बच्चे को बताएंगे कि आप बेटा ब्रश करो और you leave it on their own, so I'm sure they'll not be much interested. But you make sure you stay with them, in front of them, and guide them how to brush, and make it a fun activity and not a big task for them. I'm pretty sure, cleansing of teeth is very important. It has to start right from day one of your teeth erupting into the oral cavity. Now, a lot of people have doubts ki we cannot definitely, hold on to the teeth, and we cannot, hold on to the brush. The kids are pretty much small. As young as, less than a year also, you have something called as finger toothbrush, okay? Once you use a gauze on the gum pads, after 6 months of age, जब दांत निकलने शुरू होंगे, 6 महीने के बाद जब दांत आना शुरू होंगे, तो आपको ब्रश करने के लिए भी एक तरह का ये ब्रश अवेलेबल है मार्केट में, जो आप अपनी उंगली पे पहन के बच्चे के दांत साफ कर सकते हैं। तो दिस इज प्रीटी मच कंफर्टेबल, आसानी है, और दूध के दांतों के लिए भी आप प्रीटी मच ये यूज कर सकते हैं जब बच्चा काफी छोटा हो। और आगे जब बच्चे बड़े होते हैं, जब 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के हो जाते हैं, तब हम उनको अलग वैरायटी ऑफ टूथब्रश लाए। आप अगर जो ब्रश आपके लिए खुद खरीदते हैं, ओरल बी या कौन सी भी ब्रांड का, अगर आप वैसे ही डल टूथपेस्ट और डल ब्रश उनको देंगे तो वो कभी ब्रश नहीं करेंगे। सो जैसा मैंने पहले बताया था कि you have to make this particular thing an activity, a fun activity, जहाँ बच्चों को मजा आए ब्रश करने में, उनको लगे कि हाँ हम हमारे दांत साफ कर रहे हैं। तो जब आपका ब्रश थोड़ा सा कलरफुल रहेगा और पेरेंट्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सा हमको गाइड करेंगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर बच्चों के लिए दिस विल नॉट बी अ टास्क, इट विल बी अ फन एक्टिविटी। थोड़ा सा बच्चों के लिए लेट्स अस मेक अ कंफर्टेबल एक्टिविटी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। lot of parents also have this thing कि भाई ब्रश बच्चा होल्ड नहीं कर सकता and all, so this thing is also there in the market, जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है। अक्सर ये ब्रश जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला हम उन बच्चों को देते हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, मेंटली हो या डेवलपमेंटल हो, तो अमूमन उन्हीं के लिए है। बट क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को मजा आता है बिकॉज वाइब्रेशन इसमें होती है, उनको सिर्फ अपने दांतों पे इनको यहाँ से वहाँ या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दे हैव टू जस्ट मूव इट अराउंड, थोड़ा सा हिलाना होता है, तो दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल ये चीज करते हुए। तो आप अगर मैनुअल नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद द इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, बट ब्रशिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप प्लीज ये सब दिमाग से निकाल दें कि दूध के दांत हैं, एक 6 महीने, साल में या 5 साल में, 8 साल में चले जाएंगे, बिकॉज अगर आप अपने दूध का दांत का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो कैविटीज आपको होंगी, आगे जाके जो इन्फेक्शन होगा, ये आपको बच्चे को वैसे इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो लीड टू डैमेज टू द परमानेंट टूथ जो अभी आए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा देखेंगे टूथपेस्ट। कई सारों का डाउट होता है कि सर टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है। वी हैव अ वेरी वेरी क्लियर वैरायटी मार्केट में। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री यही बताती है कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो 2 साल के अंदर के बच्चे हैं उनके लिए फ्लोराइड फ्री जो टूथपेस्ट है वो अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं विद द ब्रश। इसमें आपको बहुत से छोटा अमाउंट लेना है, यू डोंट हैव टू फिल द ब्रश पूरा आपको भरना नहीं है। वुमन हमारे पास गलती ये होती है कि हम समझते हैं जितनी लंबाई ब्रश की है उतना ज्यादा पेस्ट हमको इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ थोड़ा सा पेस्ट इस्तेमाल करके ब्रशिंग के लिए ले सकते हैं। उसी तरह 2 साल के ऊपर के बच्चे हैं, 2 से 4, 2 से 5 या 2 से 6 तक, उनके लिए आपको अलग से टूथपेस्ट मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर एज, जहां पे आप वो टूथपेस्ट लेके मेक श्योर कर सकते हैं कि वो सुबह शाम 2 टाइम बिल्कुल ब्रश करें। आगे चलते हैं। माउथ वॉश, जी हाँ, माउथ वॉश सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर adults, it is also there for pediatrics। बच्चों के लिए भी माउथ वॉश है और इनमें बड़े अच्छे से फ्लेवर, अच्छे से कलर्स भी अवेलेबल मौजूद हैं। तो आपने बच्चों को ये एंकरेज करना है कि बेटा ब्रश करने के बाद आपने ये थोड़ा सा ढक्कन में लेना है एंड उनको कुल्ली करने के लिए बताना है, थोड़ी देर स्विश करने के बाद लेट देम स्पिट आउट। डेफिनेटली व्हेन दे आर 3+ और 4+, दिस इज व्हेन यू एक्चुअली यूज दिस। आप एक
ये 1.5 साल के बच्चे को बोलेंगे तो वो निकल लेगा। तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप कोई 1.5 साल के बच्चे को ना दें। ये 3 साल या 4 साल जो आपकी बात समझ सकता है, उसको थोड़ा सा स्विच करवाएं ताकि से उनको प्रैक्टिस हो कि साथ ब्रश के साथ साथ आपको माउथ वॉश भी यूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोफेशनल क्लीनिंग, हमने ब्रश कर लिया, हमने माउथ वॉश यूज कर लिया, सर हमको डेंटिस्ट के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू हैव टू कम डाउन। इट्स नॉट बिकॉज वी चार्ज यू और समथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली हमारा देखना काफी जरूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, खासकर पीछे के दांत जहां बच्चे ब्रश करते भी है बावजूद उसके कई बार कील लग जाता है, या दे माइट नीड सम फिलिंग और सम प्रिपरेशन दैट हैज टू बी डन। तो इफ यू दे हैव टू कम डाउन। समटाइम्स हो सकता है कि उनको प्रोफेशनल क्लीनिंग की भी जरूरत पड़े, एंड दैट इज वेयर वी कम इन पिक्चर। जस्ट मेक श्योर दैट उनके दांत इन एंड आउट सारे क्लीन हो, उनके जो प्राइमरी दांत हैं दूध के वो भी खराब ना हो, और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर के दांत भी उनको कोई इफेक्ट ना पड़े। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपको आर्ट है, फ्लड एप्लीकेशन है, पिट एंड फिशर सीलेंट है, हॉल्स टेक्निक है, कीमोमैकेनिकल केरीज रिमूवल है। अब ये क्या चीजें हैं हम देखते हैं एक के बाद एक। ये आता है सारा प्रिवेंशन में। आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? एक तो एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक जो ART है, उसका ये पूरा फॉर्मूला है। इसमें यूजुअली होता ये है, अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर देखें आपने, तो अगर कोई कैविटी होती है तो हम जो एरोटर है उससे क्लीन करके फिर हम उसे फिलिंग करते हैं, बट ART में वैसा नहीं होता। ART में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम स्पून एक्सकेवेटर, जैसे राइट वाली पिक्चर में बताया जा रहा है, हम स्पून एक्सकेवेटर लेके उसका सारा कीड़ वगैरह जितना हम साफ कर सकते हैं, सॉफ्ट केरी सारा का सारा निकाल देते हैं, क्लीन करते हैं, एंड देन उसके बाद वी कैन डू अ फिलिंग। तो बहुत सारे लोग बच्चे डरते हैं कि इसमें से जो एरोटर है उसमें से आवाज आती है, मशीन से आवाज आती है सफाई के वक्त। तो वी हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। तो जस्ट बिकॉज आप, और अक्सर माँ बाप का ये भी होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे साथ ये हुआ था। For your kind information, a lot of things have come up, lot of advancements have come up, and lot of things have improved. So please, just because आपका experience bad रहा बचपन में, just don't neglect the health of your kids. आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड, ये फ्लोराइड वार्निश क्या एग्जैक्टली? नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये फ्लोराइड वार्निश एक ऐसी चीज है जो हमारे दांतों पे अप्लाई की जा सकती है। उमूमन जब पहला दांत निकलता है 6 साल की उम्र में, जब जो पहला दाढ़ आता है बच्चे को वो आता है 6 साल की उम्र में, तो जैसे नए दांत निकलना शुरू होते हैं वो अभी पूरे कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते, और ऐसे ही दांत पे जो है सो बैक्टीरिया सबसे पहले अटैक करता है। मैं परमानेंट दांत की बात कर रहा हूँ। दूध के दांत तो आपको निकल जाएंगे 3 साल तक, बट परमानेंट दांत आपको निकलेंगे 6 साल से। तो वहां से एप्लीकेशन ऑफ फ्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वन ऑल द प्राइमरी टीथ दूध के दांत भी आ जाए तब भी फ्लोराइड अप्लाई किया जा सकता है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि जब आपका फ्लोराइड दांत पे अप्लाई होता है तो ये आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है दांत में जो होता है आपके, उससे मिलके फ्लोरापेटाइट फॉर्म करता है, विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू केरीज। ये इस तरह किया जाता है। इट्स जस्ट अ सोल्यूशन। आपने डिप करके यू हैव टू अप्लाई अ थिन कोट ऑन द एंटायर टीथ, एंड दैट्स इट। That makes sure that the florapetate is formed and your teeth becomes pretty much resistant to caries. All these are preventive methods to prevent caries. Moving on, pit and fissure sealants, जैसे डॉक्टर नईम अभी सर ने अभी बताया था कि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट वाली फोटो में देखेंगे आपको ऐसे देखेंगे कि डीप ग्रूव्स वगैरह हैं और फिशर्स है, इसको पिट्स एंड फिशर्स भी बोलते हैं। अब हमको ये चाहिए कि बिकॉज दीज एरिया आर प्रिटी मच प्रोन, अक्सर यही बच्चों को खाना पीछे अटकता है लास्ट दाढ़ में, एंड वहां से उनको कैविटीज होती है। तो हमारा मकसद ये है कि हम ये डीप पिट्स एंड फिशर्स को बंद कर दे। जैसे आप राइट पे देख सकते हैं, तो ये सीलेंट एप्लीकेशन है, इसका जॉब ये होता है कि हम जो सारे ग्रूव्स और पिट्स हैं उनको कंप्लीटली सील करते हैं ताकि खाना अटके ना और कैविटी उनको आए ना। सो दैट इज द पार्ट, द रोल जो पिट एंड फिशर प्ले करता है। आगे बढ़ते हुए एक और है हॉल्स टेक्निक। कभी कभी हो जाता है कि दांत या तो बहुत खराब है या फिर बच्चे को हम क्राउन डालने की जरूरत पड़ती है। उमूमन हम क्राउन डालते हैं रूट कैनाल के बाद, बट अभी हॉल्स टेक्निक में ये होता है कि आप बगैर रूट कैनाल करे, बिकॉज आपको प्रोटेक्ट करना है दांत को, आपने बैंड्स लेफ्ट वाली फुट में अगर आप देखेंगे तो आप बैंड्स लगाने के बाद उसमें से थोड़ी स्पेसिंग आई जाएगी दांत में, उसी के बाद आप क्राउन का साइज जो भी है फिट करके यू कैन जस्ट पुट ऑन द क्राउन, सो दैट ये दांत जब तक निकल नहीं जाता मुंह में से तब तक इंशाल्लाह ये सेफ रहेगा। दिस इज समथिंग ऑफ टू टॉक अबाउट हॉल्स टेक्निक। आगे एक और तरीका है कीमोमैकेनिकल केरीज रिमूवल। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको एरोटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें सारी फोटोज में ABC में आप देखते हैं A में कैविटी है, B में हम ये जो केमिकल आता है आप डालेंगे, तो जैसे ही आप ये डालते हैं दिस जेल रिएक्ट्स विद द कैविटी एंड तमाम जो आपकी सॉफ्ट केरीज है इट बिकम्स क्लेंजेबल एंड इजी टू क्लीन। तो DEF में वही बताया जा रहा है कि वंस इन द फॉर्म ऑफ D आप देखें इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट, इजी टू क्लीन, एंड E and F के बाद F इज द फाइनल प्रोसीजर। सो क्लीन करने के लिए यही जरूरी नहीं है, वी कैन ऑल्सो गो अहेड। नाउ हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई बच्चों को दांत में कील लगता क्यों है, इसकी वजह क्या है? बेसिक डिफरेंस देखिए आप दांत में, अगर लेफ्ट में देखेंगे तो दूध का दांत है, जो आपके पल्प हॉर्न्स है
और जो इनामल डेंटिन है वो काफी थोड़ा सा है अगर हम बड़े दांत से कंपेयर करते हैं। राइट पे अगर आप देखें तो थिकनेस काफी कम है इसकी, तो इसीलिए बच्चों में कीड़ आसानी से लगते हैं। दूसरा, उनके जो पल्प हॉर्न से काफी ऊंचे है, इसलिए उनका रूट कैनाल या जो उनका जो स्वेलिंग है, उनके नर्व्स तक बीमारी काफी जल्दी पहुंचती है। अब ये है फिलिंग की अगर हम बात करें तो आप रेस्टोरेशंस देखिए, फर्स्ट स्लाइड में आपको कील लगा हुआ है। सेकंड में हम जो प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है, अब इसमें हम सिर्फ केमिकल्स यूज नहीं कर सकते, हमें एरोटर का इस्तेमाल करने के बाद नीचे फिलिंग करनी पड़ती है। दिस हैज टू बी डन। ये फिलिंग है, अगर हम फिलिंग नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा रूट कैनाल पे, जो हम आगे देखेंगे। और एक चीज है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। आपकी दोनों तस्वीरों में अगर आप देखें तो कीड़ आपको बड़ा ही साफ एक्सरे में नजर आएगा, बट ये अभी नस तक पहुंचा नहीं है, नस के बहुत करीब है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, अगर आप फोटोज देखेंगे ABC में, ए में आपको बताया जा रहा है कि आपको कैविटी काफी डीप है। बी में अगर आप देखें तो हम वो नस के काफी करीब है, बस नस में पहुंची नहीं है। हम उसको क्लीन करेंगे, उसके ऊपर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इनडायरेक्ट पल्प कैप डालेंगे, उसके ऊपर हम रेस्टोरेशन करेंगे। ऑल दिस हार्ड वर्क इज बीइंग डन ताकि ये नस तक ना जाए, बिकॉज बच्चों में जब बात नस पे पहुंचती है तो बहुत तकलीफ भी होती है और सूजन भी आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर ये चीज हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये चीज कैविटी डीप होती है, पल्प तक पहुंच जाती है, तो हमें क्या करना है। एक तो है पल्पोटमी, जिसमें हम ये करते हैं कि जो कोरोनल पल्प इन्फेक्टेड है उसको निकाल देते हैं, और जो रूट में मुंह का पल्प बाकी है जो जिंदा है उसको वैसे ही रखा जाता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या है, ऐसे दांत जो वाइटल हो, किसी में स्पॉन्टेनियस पेन ना हो, इसमें कोई स्वेलिंग एब्सेस ना हो, कोई साइनस फॉर्मेशन ना हो, पस ना हो, इन्हीं दांत में किया जा सकता है। कैसे करते हैं आप प्लीज फॉलो करिए। ए में अगर आप देखा जाए, ABC में, तो ये है जो काफी क्लोज है पल्प के, तो हम सिर्फ एनेस्थीसिया देने के बाद इसे ओपनिंग करेंगे। आप ओपनिंग करने के बाद EF में बताया जा रहा है आप साफ करेंगे कोरोनल पोर्शन को। जी में, फोटो जी में अगर आप देखेंगे तो आपको रेडिकुलर पल्प अभी भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको कंट्रोल करने के बाद फिल इट अप विद लॉट ऑफ मटेरियल। आजकल बहुत सारे मटेरियल्स आ चुके हैं, MTA हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। हम ये फिल करने के बाद उसके ऊपर परमानेंट सीमेंट डालेंगे एंड देन वी पुट अ क्राउन। तो आप जो देख सकते हैं वो L में, O में देख सकते हैं कि आखिरी एंड में यू कैन जस्ट, दैट इज कॉल्ड पल्पोटमी। और अब अगर एक्सरे देखें तो आप देखें कि कंप्लीट लेंथ क्लीन नहीं किया गया है दांत का, सिर्फ ऊपरी हिस्सा क्लियर किया गया है। This is called pulpotomy and this is done only in vital tooth. अब खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्शन डीप पहुंचता है, बच्चे को सूजन आती है, तो क्या करना है, इसको बोलते हैं पल्पेक्टमी या बच्चों के दांतों का रूट कैनाल। इसमें हम कोरोनल पोर्शन और रेडिकुलर पोर्शन दोनों का जो है सो सफाया करने के बाद उसमें हम मटेरियल डालते हैं ताकि बच्चे को फिर उस दांत में कोई तकलीफ ना आए। इंडिकेशन इसके ये है कि ये दांत अब डेड हो चुका है, जो इसका नर्व सप्लाई था, जो पल्प था, इट इज कंप्लीटली डेड, इसलिए हमको करना है। और अगर कोई सूजन आती है, पस निकलता है, कुछ सफेद कलर का लिक्विड निकलता है, ये सारे इंडिकेशंस है कि दिस नीड्स टू बी क्लेंस्ड। अब आप प्रोसीजर देखिए, सेम वैसे ही है, एनेस्थीसिया आपने देना है आपने सारा दांत क्लीन करना है। तब अगर आप FGH में देखेंगे तो कैनाल्स आर बीइंग क्लीन नाउ, एंड देन I और J में अगर आप देखेंगे तो we are putting medication that is Vitapex or Metapex is being put into it and then it is being pushed. Once that is done, K और L में you can put a crown on top of it. So after doing the root canal, you put a crown. अब आप M और N में देखिए, M में अगर आप you can appreciate the root canal that is done. This is called pulpectomy or child's root canal and the entire filling is, you can see, आप देख सकते हैं सारे लेंथ ऑफ द रूट में फिलिंग भरी हुई है। इसी को बोलते हैं पल्पेक्टमी या रूट कैनाल, कंप्लीट रूट कैनाल। जो पल्पोटमी था वो पार्शियल था, ये कंप्लीट है। एंड आप NOP में देखिए, फॉलो अप है कई महीनों का। तो दिस इज द पर्पस, द वजह इसकी ये थी कि नीचे जो परमानेंट दांत आ रहा है इसको इफेक्ट ना हो एंड ये प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए हम इसे रूट कैनाल करते हैं। तो कई लोग यही पूछते हैं, सर क्या वजह है रूट कैनाल, बच्चों का दांत में क्या जरूरत है करने की। सर आप नहीं करवाएंगे तो दूध का दांत तो वैसे ही जाएगा, आपका परमानेंट दांत भी इफेक्ट हो जाएगा एंड चाइल्ड विल बी इन लॉट ऑफ पेन। आगे बढ़ते हैं, अपेक्सोजेनेसिस। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम सिर्फ उसी दांत में कर सकते हैं जो वाइटल हो। अब ये उन दांतों में करते हैं जो नए अभी अभी आ रहे हैं। 6 साल के बाद जो आपके परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं, उसमें अगर कभी कैविटी हो जाए या डीप को एक्सपोजर हो जाए तो उसमें एपेक्सोजेनेसिस करेंगे हम। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट फोटोज में आप देखिए सॉरी, ए में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर से थोड़ा सा इंफेक्शन डीप था, बट बी में आफ्टर डूइंग एपेक्सोजेनेसिस, आफ्टर क्लीनिंग द कोरोनल पोर्शन,
दिस इज अलाउिंग द एंटायर टूथ टू डेवलप ऑन इट्स ओन। अगर आप लेफ्ट वाली फोटो में देखें तो अभी अब पूरा फॉर्म हुआ नहीं है रूट, राइट वाली फोटो में आप देखें कि पूरा रूट फॉर्म होता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टूथ इज वाइटल। ये दांत वाइटल है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि जहां एक्सपोजर हुआ है ऊपरी हिस्से में सफाई करने के बाद मेडिकेशन डाल के छोड़ देंगे, तो इसीलिए कंटिन्यूड रूट डेवलपमेंट कैन बी सीन। दिस इज कॉल्ड एपेक्सोजेनेसिस। ये सिर्फ वाइटल दांत में ही किया जा सकता है। अब खुदा ना खास्ता अगर परमानेंट दांत है और उसका रूट अभी बंद हुआ नहीं है तो क्या करें, उसको बोलते हैं एपेक्सिफिकेशन। इस प्रोसीजर में ये होता है कि अगर आप देखें लेफ्ट वाली फोटो में अभी पूरा बंद हुआ नहीं है, तो हमने क्या किया, वहां पे मेडिकेशन डाला एंड में, जिसे एमटीए बताया जाता है। एमटीए डालने के बाद रूट एंड क्लोजर आपको खुद ब खुद देंगे। हमको ये दो दांत बंद हो रहा है उसको हमको इंड्यूस करना पड़ेगा। तो after putting MTA or other medications you get a root and closure, but this is done only when the tooth is completely dead. This is called epexification. आगे बढ़ते हैं। क्राउन्स बच्चों में 3 टाइप के होते हैं, स्टेनलेस स्टील क्राउन, स्ट्रिप क्राउन्स एंड जिरकोनिया क्राउन्स। स्टेनलेस स्टील क्राउन्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे आर वेरी थिन। ये बहुत पतले होते हैं और आसानी से दाल आप निकाल भी सकते हैं। कहाँ का यूज करेंगे आप, एक्सटेंसिव केरीज में, रूट कैनाल के बाद, या कोई दांत अगर फ्रैक्चर हो जाए, और ऑल्सो एज सेमी परमानेंट रेस्टोरेशंस। तो वेरी सिंपल, आपके सामने सारी फोटोज में आप क्लियरली देख सकती हैं। स्पेशली जो एक्सरे बताया जा रहा है उसमें आपको क्लियर है कि ये कैसा रूट कैनाल करने के बाद क्राउन डाला जा सकता है। दिस गिव्स एन एंटायर प्रोटेक्शन, आपके तमाम बच्चे के दांत को गिव्स अ कंप्लीट प्रोटेक्शन। आगे स्ट्रिप क्राउन है। स्ट्रिप क्राउन्स आर थोड़े से like this. These are usually used in the anterior teeth. अगर सामने के आप दांत देखें तो अक्सर बच्चों के दांत में कीड़ वगैरह लगता है, तो हम प्रिपरेशन करने के बाद साइज लेते हैं, साइज चेक करते हैं और उसके बाद वी जस्ट मेक श्योर दैट वी डू अ कंप्लीट फिलिंग। सो आप बिफोर आफ्टर में चेंजेस देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यू कैन ईजर यूज अ स्ट्रिप क्राउन और आल्सो फ्री हैंड कॉम्पोजिट। आगे जिरकोनिया क्राउन व्हिच हैज कम प्रीटी मच रिसेंटली। The only thing in this is you have to do a lot of preparation, especially if you see the D photo where you have to basically do 1 to 2 mm of subgingival reduction. So this is something that has to be done, and then after doing the entire preparation you sit in the crown. So this is a bit extensive procedure, usually done in general anesthesia, but also depends from patient to patient. तो हम ये देख रहे हैं कि क्राउन्स सारे के सारे, स्ट्रिप हमने स्टेनलेस स्टील क्राउन देखे, स्ट्रिप क्राउन्स देखे, और आपका जिरकोनिया, और ये है एंटीरियर जिरकोनिया क्राउन्स बिफोर एंड आफ्टर फीचर्स। दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर ट्रीटमेंट। प्रिपरेशन के बाद हम ऐसे कर सकते हैं ऑल दिस। अगर आपका फिर ये सवाल उठता है कि क्यों दूध के दांत पे इतना हमको टेक केयर करना है, बिकॉज दिस इज टू सेफगार्ड द प्राइमरी टीथ एंड आल्सो सेफगार्ड द परमानेंट टीथ। ये है पोस्टीरियर जिरकोनिया। अब सर्जिकल पार्ट में आते हैं। यूजुअली समटाइम्स यू सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपको दांत निकालने की जरूरत पड़ जाती है जहां पे आपको दांत बहुत खराब हो, या कीड़ का बहुत ज्यादा कीड़ लग गया हो, छोटे से टुकड़े बाकी हो, ठीक है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस जहां आप रूट कैनाल नहीं कर सकते, वहां आपको दांत निकालना ही पड़ेगा। तो वहां पे एनेस्थीसिया देने के बाद बच्चों को यूजुअली दांत निकाला जाता है। एंड समटाइम्स कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और बताते हैं, सर हमारे बच्चे को 2 दांत है, जैसा फोटो में देख सकते हैं, सामने 2 दांत है और पीछे 2 दांत है। तो ये हमारे तो 2 दांत है, पहले हमारे भी 2 थे, हमारे बच्चों को 4 दांत कहाँ से आ गए? तो ये सामने के आपके 2 दांत है, ये दूध के दांत है। इसको टाइम आने पे इन्होंने गए नहीं दूध के दांत, और पीछे से परमानेंट दांत बिकॉज टाइम हो गया था आने का, तो ये ऊपर से आ गए। इस तरह हम पार्किंग अगर नहीं मिलती है तो टेढ़ा मेढ़ा लगा के आते हैं, हम किसी की कार ब्लॉक करके आते हैं, इसी तरह ये पीछे से निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट ये रहेगा कि हमने जो दूध के दांत है उनको निकालना जरूरी है, ताकि जो परमानेंट दांत आ रहे हैं वो बराबर अपनी स्लॉट में आ सके। तो हमको पार्किंग खाली करवानी है प्राइमरी से, ताकि परमानेंट दांत अपनी गाड़ी वहां पार्क कर सके। आगे अब दांत कभी निकालने के बाद हो जाता है जल्दी, अगर आप निकालेंगे तो हमको स्पेस मेंटेनर भी देना पड़ेगा, जिसमें मेंटेनर है और रिगेनर है। आप क्यों स्पेस मेंटेन करते हैं? ये इसीलिए करते हैं ताकि परमानेंट दांत जो है सो जल्द से जल्द आ जाए। एक है आपका बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर। अगर आप देखिए कि पीछे दांत पे बैंड लगा हुआ है और सामने एक लूप आता है, यहाँ पे आपका परमानेंट दांत निकल के आएगा। ये जगह बनाए रखेगा कि आपका जो आर्च है वो कोलैप्स ना हो, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे का दांत धीरे धीरे सामने की स्पेस में आ सकता है। तो एक बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर, और एक एनहांस पैलेटल। अगर आपके ऊपर के 2 दांत चल जाए तो ये यूज कर सकते हैं आप, सो दैट ये मूव ना हो। इसी के साथ आप ट्रांस पैलेटल भी यूज करेंगे, जो आर्च आपको एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ये स्पेस मेंटेन करता है बेसिकली, ताकि परमानेंट दांत अपनी जगह पे निकल जाए। और नीचे की बात, अगर लोअर जॉ की बात करें तो वी गिव लिंगुअल आर्च, जैसा आप देख सकते हैं, पीछे दोनों मोलार्स बैंड करके यू टेक सपोर्ट ऑफ द एंटीरियर इरप्टिंग टीथ, और वहां पे यू कैन गिव दिस थिंग। और एक है डिस्टल शू। कभी आप आखिरी का दांत निकालते हैं और परमानेंट पीछे का दांत अभी आया नहीं है, तो आप डिस्टल शू देंगे ताकि जो पीछे का दाढ़ आ रहा है वो बराबर सीधे से आए,
टेढ़ा ना हो, अगर टेढ़ा होता है तो बाद में जो प्रीमोलर उसके बाजू बगल में है वो बाद में शायद आगे फ्यूचर में निकल ना पाए, तो इसीलिए ये भी देना काफी जरूरी है। स्पेस रिगेनर, कभी कभी जगह चली जाती है तो रिगेन करने के लिए, जैसा हर्ब्स या ओपन कॉइल स्प्रिंग है, ये हमें जगह कभी रिटेन करने भी हेल्प करता है। अब आते हैं ओरल हैबिट्स में। सबसे पहले थंब सकिंग बहुत कॉमन है, इनफैक्ट इवन आई यूज्ड टू डू दिस व्हेन आई वाज अ यंग किड। कुछ बच्चे सारा का सारा हाथ मुंह में ले लेते हैं, कुछ एक उंगली, कोई दो उंगली, एंड दिस विल हैव अ वेरी बैड इफेक्ट। तो इसकी वजह यह है कि प्रॉब्ली दे आर नॉट बीइंग ग्रेटिफाइड, या फिर एट टाइम्स दे फील दैट thing of itchiness sometimes and insecurity at times, poor gratification, all this, ये सब सारे रीजन हो सकते हैं कि ये लेते हैं। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दांत कुछ इस तरह हो जाएंगे अगर ये लेंगे तो, सामने के और बीच में दांत की जो आपकी स्पेस आ रही है ये इसी तरह खुली हो जाएगी। तो वी हैव टू स्टॉप दिस हैबिट। थंब सकिंग इज नॉर्मल टिल 1 or 2 years, बट उसके आगे इट विल बी क्वाइट problematic. So we have various options. We have the rollers, we have the bluegrass appliance, the modified bluegrass appliance, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो क्रिब है। ऑल दीज आर ट्रीटमेंट मॉडलिटीज when they put, either it pricks to them and reminds not to put, या फिर वो स्लिप हो जाएगा, तो this helps in preventing this particular thing. Next is tongue thrusting. दांत से कई लोग इसे पुश करते हैं। tongue thrusting is a common thing that is seen along with the combination of thumb sucking. ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स ये है कि अगर बच्चे में रिटेंस वाला हो, या माउथ ब्रीथिंग हो, या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या कुड बी हेरिडिटरी एज वेल, दीज आर द reasons why it could be. And then what happens is the upper arch is pretty much naturally, there is increased overjet. The front teeth just come out protruding like that, and you also have an anterior open bite, and you also have a posterior cross bite. तो इसमें मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? We just generally give an oral, we also give an oral screen and also a non-palatal arch to prevent this tongue thrusting habit. Next would be mouth breathing. कई सारे बच्चे अपने मुंह से भी सांस लेते हैं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, या तो उनका कोई नेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो जो मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है, या फिर लिप इनकॉम्पिटेंस, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये सारी वजूहत हो सकती हैं। तो चेहरा कुछ इस तरह हो जाएगा, अगर आप देखें तो नीचे का जॉ थोड़ा पीछे हट जाएगा, सामने का और वो आ जाएगा, और एंड यू ऑल्सो हैव अ वेरी डिफरेंट नैरो बॉडी पोस्चर। अंदर आप क्या देखते हैं कि मैक्सिली जो ऊपर का आर्च है काफी डीप हो जाएगा, और देन आपको सामने के दांत इतना अजीब दिखेंगे, खुला खुला दिखेंगे नीचे की तरफ, जिसमें आपको पोस्टीरियर क्रॉस बाइट और ओपन बाइट दोनों आ जाएंगे। और आपको इसके साथ साथ, जब क्योंकि ये मुंह से सांस ले रहे हैं और नाक से नहीं ले रहे, तो इनके गम्स भी स्वेल हो जाएंगे थोड़े से, और लिप बिकम्स क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। तो हाउ डू यू मैनेज दिस? देयर इज समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज ओरल स्क्रीन, जो हमने पहले भी देखा था। इसमें होल्स होती हैं। Why we give this? आप ये लगा के प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे को धीरे धीरे, कि वो नाक से डिपेंड हो सांस लेने के लिए, एंड एज एंड व्हेन ही इज इंप्रूविंग, धीरे धीरे होल्स क्लोज करना हम शुरू करते हैं। दैट्स द मैनेजमेंट। स्पेशल चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड स्पेशल बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट, दे जस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इनमें चंद बातें मैं 3 रखूंगा केसेस। एक है डाउन सिंड्रोम। ऐसे बच्चों में सिंड्रोम है ट्रायोसोमी का, ऐसे बच्चों में बहुत सारी एनलार्ज टंग होती है, ड्राई माउथ होता है, दांत आगे पीछे होते हैं, आर्चेस बड़े ऊपर होते हैं, टंग बड़ी होती है, सलाइवेशन होता है। और एक है सेरेब्रल पाल्सी, जहाँ पे बच्चों में मोटर डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर ज्यादा कंफर्टेबली नहीं सकते हैं, तो दे कैन नॉट मैनेज, दे कैन नॉट ब्रश प्रॉपर्ली, दांत सारे प्रोट्रूडेड होते हैं। और एक केस जो है आपका मेंटल रिटार्डेशन भी एक है, जब बच्चे का IQ इज नॉट दैट ऑफ अ नॉर्मल लेवल, तो उनको भी काफी दिक्कत होती है ब्रश करने में, अपना माउथ मेंटेन करने में, बातचीत करने में, खाने में। So all these kids are very, very, very special. So all the parents out there who are taking care of all the special children, a big hands off and a big salute to all people. And these kids are very special. Please don't keep them at home. Please get them to us so that we can see what problems they are having, उनको क्या तकलीफ है, हम उसको address करेंगे इंशाल्लाह, and we'll just make sure that they get treated. So I would like to conclude by saying that first and foremost, just make sure that you come along with your child, please. And the most important thing, please, if your child is not eating at home, please never say, I'll take you to a doctor, he'll give you an injection. Please don't make us the Amresh Puri of their lives. We haven't done anything wrong, because a lot of kids come to us with this fear. So please make sure that they come for a regular checkup, make sure they brush twice daily and have good eating habits. They don't take any frequent snacking, and you make sure they have chocolate, so they also brush twice daily, day in, day out. And also they come for regular checkup, so that we can just educate the parents and also the child to how to maintain their oral hygiene. That's my contact. In case you have any queries, you can just mail me or contact me. Thank you all for being a lovely audience. Thank you very much, Dr. Hakim, for the information which is to be taken into practice. And unfortunately, we cannot go back to our childhood, but the generation which is coming up can be taken care well and apply this knowledge you have shared. Jazakallah khair.
We open the house now for the question and answer session, and the audience can ask the question verbally. The brothers and sisters who have got the question, they can put up the question with the two experts. Alhamdulillah Rabbil Alamin, As-salatu was-salamu ala Rasulil Amin, Amma ba'd. IMA Kuwait, Indian Muslim Association Kuwait, अब्बासिया हल्का, अब्बासिया यूनिट की तरफ से मैं दोनों स्पीकर्स जनाब डॉक्टर नईमुद्दीन साहब और जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में इतना वैल्यूएबल और इतनी मालूमाती जो है लेक्चर्स दिए और इससे उम्मीद करते हैं कि तमाम ऑडियंस हमारे हम सब लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और इसको हम अपने जो है कारआमद इंफॉर्मेशन को हम यूज करके अपने दांतों का जो है और अपनी हेल्थ का इसमें ख्याल रखेंगे और इससे जो है जो मुख्तलिफ मसाइल और तकलीफ जो हमको होती है बच्चों को ख़ास तौर पर, उससे हम जो है इंशाल्लाह बच सकते हैं। तो ये बहुत ही मुफीद और मालूमाती प्रोग्राम था और इसके लिए जो है हम दोनों स्पीकर्स का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया और तमाम ऑडियंस का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इससे इस्तेफादा हासिल किया। IMA अब्बासिया हल्का और IMA कुवैत वीकली जो है दुरूस का एहतमाम करते हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि जो थर्सडे को इशा के बाद में कुवैत के टाइम के हिसाब से इशा की नमाज के बाद में हर जुमेरात को ये प्रोग्राम दुरूस का जो है एहतमाम होता है, तो इसी लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपके कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स अगर शेयर करेंगे आप, तो आपको जो है इनविटेशन भी भिजाया जाएगा, तो उससे आप दीनी दुरूस का दर्स कुरान वगैरह में जो है आप शिरकत करके उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ मैं IMA कुवैत अब्बासिया हल्के की जानिब से। अब हम इंशाल्लाह कफ़ारे की दुआ के साथ में इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Thank you, Saifuddin sir. We will now conclude the program, and many thanks to our both the speakers, the audience, and the organizing team of IMA Abbasiya unit. It's time for us to sign out with a message again that dental health is a gateway to overall health. Thank you very much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.